Good morning students, greetings of the day to all of you. So in this video we'll be covering the test for divisibility. We have covered the topics till the test of the sieve of Eratosthenes in our previous videos, and chapter 1 and chapter 2 and chapter 3 consecutive. So now moving on to the test for divisibility by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11 will be covered in this topic, and then we'll be moving on to the exercise part. Okay, so divisibility by 2, it is very easy. Any number which has on its at its ones place the following numbers will be divisible by 2: 0, 2, 4, 6 and 8. Either of the numbers present at the ones place, this means that the number is divisible by 2. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. This will be divisible by 2. If I make the number like this is also divisible by 2. If the number is like this is also divisible by 2, because at the end it is 6 and 6 is present. If I make the number like this is also divisible by 2. If I make the number like this is also divisible by 2. So now moving to the next part, divisibility by 3. Divisibility by 3 can be understood by calculating the digits, by summing up the digits of the number. For example, I have a number 1, 2, 3, 4, 5. If I calculate the digits, it will be 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10 and plus 15. So it will be 15. So is 15 divisible by 3? And the answer is yes. So the sum of digits should be divisible by 3. Then the number is divisible by 3. Divisibility by 4. Any number can be divisible by 4 if the last two digits of the number are divisible by 4. Last two digits should be divisible by 4. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If I take this number, is it divisible by 4? Let us check. 78. Is 78 divisible by 4? 78, 4, 4, 1, 8, 3. 8 is 3. 38 divisible by 4? No. So this means the whole number is not divisible by 4. If I take the number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and I write 24. So is 24 divisible by 4? Yes. 6 4s are 24. Therefore this number is divisible by 4 and the former one is not. Divisibility by 5. This will require that the digit present at the ones place should be either 0 or 5. For example, if I take a number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Is this divisible by 5? Yes, because at the ones place we have a 0 and it will be divisible by 5 because 5 के दो ही मल्टीपल होते हैं, या तो वो 5 से एंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5, 15, 25 एक्सेट्रा, या फिर 0 से एंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0, 10, 20 एक्सेट्रा. So is this number divisible by 5? Yes, because it has 5 at the end. Now moving on to divisibility by 6. Any number will be said to be divisible by 6 if it is, or if it passes the divisibility test of both 2 and 3. If a number is divisible by 2 and also by 3, then it will be divisible by 6. We can understand it more easily by taking an example. For example, let us take 36. So if we factorize it, 2, 1, 8, 2, 9, 3, 3, 3, 1. So we should at least get 1, 2 and 1, 3 in the factors apart from the other factors. It will be said to be divisible by 6 because 2 into 3 we will get a 6 and the remaining numbers will be 6 into 2 into 3, which will lead to 36. 6 2s are 12, 36. You can take any number if the factors include 1, 2 and 1, 3,
then it will be divisible by 6. Now, divisibility by 8. This is a little more lengthy because the last 3 digits should be divisible by 8. Then the number is said to be divisible by 8. Also, if a number is not divisible by 4, then the number will also not be divisible by 5. Not divisible by 4, then this implies this symbol is pronounced as this implies, then it will also not be divisible by 8. Okay. For example, let us take number 48. Okay, 8 6 are 48, the last 2 digits. But if we take another number like we can say 848. Okay, so last 3 digits, are they divisible by 8? Let us check. 1 times 0, 6 times. Yes. So any number if written on the left hand side, any digits written on the left hand side, if the last 3 digits are divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8. For example, 1 2 3 4 5 8 4 8, this will be divisible by 8. Now divisibility by 9, it is similar to that of divisibility by 3. The sum of digits should be divisible by 9. For example, if we take a number 1 2 3 4 5 6 7, is it divisible by 9? Let us check. 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 15, 15 और 7 और 6 कितना हो गया? 13. तो 15 और 6, 15 और 13 कितना हो गया? 28. 28. So is 28 divisible by 9? No. Then this means that this number is also not divisible by 9. On the other hand, if we take a number 1 2 3 4 5 6 6, then the result will be 27 and it is divisible by 9. Therefore this number will also be indivisible by 9. You can divide it yourself and you can check the number if it is divisible by 9 or not. Now coming to the last two divisibility test. Divisibility test by 10. This is similar to that of 5, except that it only requires the digit 0 at the ones place. For example, 10, 20, 30, 400, 4000, 40,000, etc. So if the number has 0 at its ones place, it will be divisible by 10. Now divisibility by 11. This is a little more complex. So I would like your attention to be focused over here. Here, what we have to do is that we will take any number. Okay, first step, we will proceed from right to the left. And what we'll do? Assigning odd and even numbers, even digits. Okay. Second step will be, we will sum up the odd and we will sum up the even separately. The third step will be, sum up of odd minus summation of even should be either 0 or should be divisible by 11. Or you can say it should be divisible by 11. Every number has can divide 0. For example, if you take 6 into 0, it will be 0. If you take 7 into 0, it will be 0. Therefore, 0 is divisible by every number. So it should be divisible by 11. Now, let us check. 309 from right to left. This is the first digit, odd digit, even digit, and this will be the odd digit. So we will write 9 plus 3, which will make 12, minus 0 is equal to 12. So is 12 divisible by 11? Therefore, the number is also not divisible by 11. Now, odd, odd, even, even. So 1 plus 2, 3, minus 1 plus 2, 3 is equal to 0. Is 0 divisible by 11? Yes, therefore the number will also be divisible by 11. Now the last example, odd, odd, odd. So 9 plus 0, 9 plus 7, we get 16, minus 2 plus 1, 3. What do we get? 13. So is 13 divisible by 11? No, therefore the number will also not be divisible by 11. So this step you have to remember.
in order to check for divisibility by 11. Also, for your convenience, I have written the steps in typed form so that you can write it down in your notebooks for convenience in your future exams or in your future problems and questions. Find the difference between sum of digits at the odd places from the right, as I have discussed, and the sum of digits at the even places from right of the number. So, if the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. So, pause the video and write it down, moving on to the next topic. Okay, so I'll do the first question of exercise 3.3 for you guys, and the remaining questions will be attended separately in another video, in the next video, captioned as exercise 3.3. okay, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन 1 में यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें बताना है कि इन नंबर से ये डिविजिबल है या नहीं। तो एक हमें टेबल दे दी गई है, अब हम लोग इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे 128 का एग्जाम्पल दे रखा है, तो मैं एग्जाम्पल एक बार समझा देता हूं एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। 128 इज इट डिविजिबल बाय 2? हाँ, क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से 8 हमारे पास वंस प्लेस पे है, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 से है कि नहीं? 8 और 2 10 और 1 11, तो 11 डिविजिबल है 3 से? नो है। 4 से है कि नहीं? 28 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 7 4 जा 28। 5 से है कि नहीं? ना ही 5 है ना ही 0 है एट वंस प्लेस, देयरफॉर इट विल बी अ नो। 6 से है कि नहीं? 2 से डिविजिबल तो है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए ये नहीं हो। अगर 2 से नहीं होता 3 से होता तब भी ये नो ही होता। अब आ जाते हैं 8 पे। 8 में क्या रहेगा कि लास्ट 3 डिजिट्स हमें चेक करने होंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हमें जाहिर सी बात है डिवाइड करना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी बाई 8 is more feasible when you have a larger number, 5 digit or 6 digit or even greater number. Then you have the option to divide the last 3 digits and save your time. But in case of numbers which are 2 digits or 3 digits, the divisibility test and the regular division will be same. तो 128 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 8 4 8। तो ये 8 6 48। तो हम लोग इसको यस कर देंगे। अब 9 पे आ जाते हैं, तो समेशन जो है हमारा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, देखने की बात यह है कि 3 से डिविजिबल नहीं था, तो 9 क्या होता है? 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, देयरफॉर इट विल ऑल्सो नॉट बी डिविजिबल बाई 9। दूसरा तरीका क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा देंगे, प्लस करेंगे, 8 और 2 10 और 1 11, इज 11 डिविजिबल बाई 9? नो, देयरफॉर नहीं डिविजिबल रहेगा। अगले पे आ जाते हैं 10 पे, तो क्या यहाँ 0 है? नहीं है, तो फिर ये नो हो जाएगा। 11 पे आ जाते हैं, तो 8 और 1 9 माइनस 2, क्या डिविजिबल है? नहीं। Now I will be solving the following questions for you and I will be writing the answers for the others at the end so that you can write it down. And I think that this one, this one, this one and this one seem to be a little tough because they are bigger digits number. So I will solve these and I will also solve this one. Okay. So the remaining I will provide the answers. So now moving on, 1586 divisible by 2 क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं 3 पे, तो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 4, तो 4 से डिविजिबल लास्ट के 2 डिजिट, तो 4 2 8 और यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से ना ही 5 है वंस प्लेस पे, ना ही 0 है, तो 5 से भी नहीं होगा। 6 से, क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं था इसलिए 6 से भी नहीं माना जाएगा। 8 से, क्योंकि 4 से ही डिविजिबल नहीं था, तो फिर 8 से भी नहीं माना जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 586 को डिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन जब 4 से ही नहीं है तो फिर आपका आंसर नॉर्मली आ गया है। 9 से डिविजिबल है कि नहीं? तो हमारा क्या आया था? 20 आया था। 29 से डिविजिबल है? नहीं है। दूसरा क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 से भी नहीं होगा। 10 से है कि नहीं? वंस प्लेस में 0 नहीं है, तो फिर 10 से भी नहीं होगा। 11 से है कि नहीं? तो ऑड डिजिट्स 6 और 5 है, 6 और 5 कितना हो गया?
11 माइनस 8 और 1 9 विल गिव यू 2। तो 2 1 11 से डिविजिबल है कि नहीं? नहीं। अब आते हैं 6686, इसमें क्या हो जाएगा? 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 8 18 और 8 26। चलो 26 हमें मिल गया। अब 2 पे आ जाते हैं, तो 6 आ रहा है वंस प्लेस पे, तो यहाँ पे डिविजिबल होगा। 26 नॉट डिविजिबल बाई 3। 4 से 86, same answer, not divisible by 4. Then it will also not be divisible by 8. Since it is not divisible by 3, it will also not be divisible by 9. Now moving to 5, ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं आ रहे हैं। 6 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं है। 10 से क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। 11 से 6 और 6 हो जाएगा 12, माइनस 6 और 6 हो जाएगा 12, माइनस 8 और 6 हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा -2। तो इज 2 डिविजिबल बाय 11? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस डिविजिबल बाय 2। अब 0 आ रहा है तो 5 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा। अगले पे आते हैं 3 पे। 6 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20 और 10 और 1 21। तो 21 3 से भी डिविजिबल है। इज 21 डिविजिबल बाय 9? नो। अच्छा, 2 और 3 से डिविजिबल रहा तो अब हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और 4 से करने के लिए 10 देखना होगा, तो 10 हमारा 4 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। और जब 4 से नहीं है तो फिर 8 से भी नहीं होगा। और 11 से है कि नहीं? ऑड डिजिट्स राइट से मार्क कर लिए। 0 + 2 2, 2 + 3 5, माइनस ऑफ 1 + 9 10 और ये 16। तो 16 - 5 इज इक्वल टू 11। तो इज 11 डिविजिबल बाय 11? श्योर इट इज। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 2 से बिल्कुल होगा, और 2 से 3 से होगा कि नहीं? 4 और 2 6, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27। तो ये 3 से भी होगा। इज 27 डिविजिबल बाय 9? यस इट इज। अब 2 और 3 से हो गया है तो 6 से भी हो जाएगा। अच्छा, अब 4 पे आ जाते हैं। तो 14 4 से है? नहीं है। 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। 5 से नहीं, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 या 0 नहीं है। तो 10 से भी नहीं होगा। और 11 पे आ जाते हैं, तो मार्किंग दी ऑड डिजिट्स। 7 और 4 11, 11 और 2 13। तो 13 माइनस 9 + 1 10 और 10 + 4 14। 13 - 14 1 - 1 not divisible by 11. Now coming to the next question, 406839, 9 2 से नहीं है, और 2 से नहीं है तो फिर 6 से भी नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। और फिर हमारा 3 पे आ जाते हैं। तो 4 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30। तो 30 जो है वो इससे डिविजिबल होगा। इस 30 डिविजिबल बाय 9? नो। ये हो गया। अब 4 पे आ जाते हैं। 39 जब 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा। 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं। 5 से नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है। 10 से भी नहीं होगा। 11 पे आ जाते हैं। 9 और 8 और 0। 9 और 8 कितना हो गया? 17, माइनस कितना हो गया? 6 और 3 9, 9 और 4 13। 17 - 13 होगा। So now I will be writing down the answers for the remaining questions so that you can write it down in your notebooks. So I have written down the answers. I will be removing the camera for your convenience. Okay, so I hope the answers have been written down. So with this we come to the end of the topic of test for divisibility, and we have also done one question of exercise 3.3, the very first question. In the next video we will be dealing with the whole exercise 3.3, and then we will be moving on to the next topic, and slowly we will be completing chapter 3, and then we'll be moving on to chapter 4. So keep your support, keep supporting our channel, like our videos, comment on our videos in case you have any suggestions, share our videos with your friends and classmates. Till then,